Today we will cover the internal and external balances through monetary fiscal policy mix under flexible exchange rate system. Right. So let me share my screen. Okay. Now we are assuming that there is flexible exchange system. Right. Now again, uh, in this flexible exchange rate system, the adjustment in the internal and external sector will not only be done through monetary and fiscal policies but also through appreciation and depreciation of exchange rate, right, and consequent movement of capital. Right now, first now we will discuss again, जैसे हमने कल fixed exchange rate में different combinations बनाए थे, and we have discussed that in these different combinations what type of a monetary or fiscal policy will be adopted by the authorities. Now in the same manner, now we will take again four different situations लेंगे, in which we will take internal problem plus the external problem. Then we make the combination and discuss that what type of a policy change will be required in these particular situations. So first we will take, if there is internal unemployment and BOP deficit, and BOP deficit is there. Now, when there's a flexible exchange system exists in the economy, then in that case, the problems of the government or authorities can make the changes in the monetary policies with a free will. Free will के साथ ले सकती हैं, because the balance of payment problems get adjusted with the help of appreciation or depreciation. Appreciation या depreciation से करते हैं. Like in case of fixed exchange rate system, we have seen that if there is any problem of deficit or surplus, then that has to be resolved, or government tries to resolve that with the help of monetary policies or monetary and fiscal policies only, because there was no because the appreciation and depreciation is not allowed under fixed exchange rate system. But under flexible exchange rate system, appreciation and depreciation is allowed. ये allowed होती है. Because of that, जो authorities हैं, they can make the changes in the fiscal policy and monetary policy according to the need and of the economy, according to will of the economy. Right. So this is the difference between flexible and fixed exchange rate system. फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में ज्यादा फ्रीडम एग्जिस्ट कर रही होती है रिगार्डिंग दी मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी, क्योंकि हमने देखा कि जब प्रॉब्लम था बीओपी में, then even there is unemployment, expansionary monetary policy होनी चाहिए थी, but because of the problem in the BOP, government has taken a restrictive monetary policy. Government ने restrictive monetary policy लिया, right? But in case of this flexible exchange rate system, the appreciation and depreciation of exchange rates becomes the tool for making adjustment in the BOP. Right, so first हम केस कर रहे हैं internal unemployment and BOP deficit. Now we will explain it with the help of a ISLMPP framework. Right, suppose this is our IS0, which is initial
IS curve representing equilibrium in the goods market, LM curve representing equilibrium in the money market, right? So this is the general equilibrium in the economy, and suppose this general equilibrium is at Y0 income level, and there is a problem of unemployment. That means this Y0 is less than the full employment से कम है, and there is a problem of deficit in the economy. That means this equilibrium right now exists at lower portion of the BB curve. BB curve की lower side पे ये exist कर रहा है BOP curve, right? Now if we take that there is full employment, हमारी full employment जो है वो Y0 से ज्यादा है, तो suppose this is the YF, full employment यहाँ exist कर रही है. Now in order to achieve the full employment achieve करने के लिए government will increase the expenditure. Government expenditure suppose increase होता है, fiscal that means fiscal policy expansion. It can be through tax reduction and with the increase in government expenditure. Because of that expansionary fiscal policy, IS curve will shift from IS0 to IS1. This shifting will take place, and there is a need for expansion in the LM curve. जो LM curve भी है उसकी भी जो है expansion होगी. So there will be expansion in the LM monetary policy, expansionary monetary policy, expansionary fiscal policy, in order to increase the level of output and employment, and there will be shift in LM curve from LM0 to LM1. So equilibrium will shift from E to E1. जो equilibrium है वो E से E1 पे shift हो गया because of the expansionary monetary policy and expansionary fiscal policy. Now this, but still there's a problem of deficit. Deficit का problem exist कर रहा है. This problem of deficit can be get resolved if there is depreciation in the exchange rate. अगर exchange rate में depreciation आता है, then because of that depreciation, large inflow in the country will take place. Inflow will be more as compared to outflow because of that depreciation. Depreciation should be allowed. Depreciation allowed होनी चाहिए, and because of that depreciation, this BB curve will shift in the downward direction. Whenever depreciation will take place, BB curve will shift in the downward direction. Whenever appreciation will take place, BB curve will shift in the upward direction. जो BB curve है वो upward direction में shift होता है. So because of depreciation, BB curve will shift in the downward direction, and this depreciation should be allowed to the point where it becomes equal to IS and LM curve on this E point. So this is the shift in the BB curve which should take place, right? So that means if there is a problem of internal unemployment and BOP deficit, then the policy mix which is required is that as far as the monetary policy is concerned, expansionary, right? As far as fiscal policy is concerned, contractionary, and as far as the exchange rate is concerned, exchange rate. मैम फिस्कल पॉलिसी तो एक्सपेंशनरी करी थी हमने. हाँ सॉरी, हाँ expansionary. दोनों एक्सपेंशनरी. हाँ दोनों expansionary. Okay, so it is expansionary and exchange rate should depreciate. जो exchange rate में है वो depreciation होनी चाहिए in order to erode the deficit, right? So this combination is required for solving this problem to achieve internal and external balance. This is the first case. ये हमारा first case आया, right? Second case हम लेते हैं. हाँ जी. इसमें rate of interest same रहेगा. हमें diagram इस according बनाना है. नहीं, इट इज नॉट एसेंशियल कि सेम रहेगा, वो जरूरी नहीं है. अगर मैं IS1 को थोड़ा ज्यादा शिफ्ट कर देती,
ये पॉइंट है थोड़ा ऊपर बन जाता इस पॉइंट से. ओके मैम. राइट. सो वो बाय चांस बना ऐसा है कि तुम्हें सेम सेम लग रहा है, लेकिन इट इज नॉट द रूल, इट इज नॉट द रिक्वायरमेंट बेसिकली. राइट. बनाना तुम्हें इस तरीके से है कि हम शो कर रहे हैं कि इंटरनल अनएम्प्लॉयमेंट को हटाने के लिए हमें एक्सपेंशनरी फिस्कल और एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी चाहिए, और डीबीओपी को, डेफिसिट को हटाने के लिए हमें डेप्रिसिएशन चाहिए. राइट. यस मैम. सो सेकंड केस हम लेते हैं. इफ देयर इज सेकंड कॉम्बिनेशन बनाते हैं, इंटरनल inflation and BOP deficit. ये ले रहे हैं. Then in that case, the rate of interest output. Now, if this is the case, then IS0, initial IS curve. This is initial LM curve. This is equilibrium point. This equilibrium is at Y0 level, and again there is a problem of deficit. So PV curve right now is over and above this E point. His E point से ऊपर है, and the full employment is below Y0 level because there is a problem of inflation. Inflation का problem है because inflation problem is existing. If Y0 is more than YF से ज़्यादा है इस particular case में, then in that case the contractionary fiscal policy will be adopted by the authorities. Because of that, IS curve will shift in the downward direction from IS0 to IS1, and contractionary monetary policy will be adopted by the authorities. Because of that contractionary policy, LM curve will shift in the upward direction. जो LM curve है वो shift होके LM1 पे आ जाएगा. और जब भी हम इनको बनाएंगे याद रखो कि हमें जो इक्विलिब्रियम है वो फुल एम्प्लॉयमेंट पे अगर हम चाहते हैं, इंटरनल बैलेंस पे चाहते हैं, राइट. सो इक्विलिब्रियम विल एग्जिस्ट ऑन दिस पॉइंट, एंड to erode the BOP deficit, depreciation will be allowed. जो depreciation है वो allowed की जानी चाहिए. Because of that, PB curve will shift in the downward direction. Downward direction में जो है shift हो जाएगा, and due to this equilibrium point will be attained. जो equilibrium point है that will be attained. So if this is the situation, if there is internal inflation and BOP deficit, then the policy mix which is desirable, जो policy mix desirable है, that is monetary policy should be contractionary, fiscal policy should be contractionary, and there should be depreciation in the exchange rate. अगर हम exchange rate की बात कर रहे हैं, there should be depreciation in that. उसमें depreciation. हाँ जी मैम, जो हमने प्रीवियस डायग्राम में बोला था कि अनएम्प्लॉयमेंट जब होती है तो उस टाइम पे हम बीपी कर्व को भी डाउनवर्ड शिफ्ट करेंगे और एक्सपेंशनरी पॉलिसीज लेंगे. मैम, बट अभी जो सिचुएशन चल रही है राइट नाउ, तो अभी तो अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज्यादा है और फिर भी इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा होती जा रही है. इस टाइम पे एक्सपेंशनरी पॉलिसी तो गवर्नमेंट नहीं कर रही है. इससे क्या होता है कि जब हम एक्चुअली पर्टिकुलर, ये हम जनरल केस ले रहे हैं कि इन्फ्लेशन किस लिए है, राइट. यहाँ पे हम इन्फ्लेशन ले रहे हैं कि मोर देन फुल एम्प्लॉयमेंट, जो हमारी डिमांड्स वगैरह है वो मोर देन फुल एम्प्लॉयमेंट जा रही है, इसलिए ये प्रॉब्लम आ रही है. लेकिन राइट नाउ द प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन इज बिकॉज ऑफ द रिडक्शन इन द सप्लाई साइड. जो अभी हम इन्फ्लेशन की बात करें वो इसलिए हो रही है क्योंकि फर्म्स जो हैं वो ज्यादा प्रोड्यूस नहीं कर रही. क्यों नहीं कर रही? बिकॉज लॉकडाउन्स लगे, लॉकडाउन्स की वजह से प्रोडक्शन जो है वो शट डाउन हुई, एंड आउट ऑफ फियर लेबर हैज मूव्ड टू देयर विलेजेस from the production areas. So because of this lockdown, business has gone down. जो business है वो down गया. This is the main reason.
तो अभी अगर हम अभी ये किसी भी कंट्री में फिलहाल का अगर हम सिनेरियो देखें, एक्सेप्ट सम कंट्रीज आर फेसिंग वॉर आल्सो, तो वहाँ रीजन क्या है इन्फ्लेशन का, वो इम्पोर्टेंट होता है। वो जहाँ पे वॉर चल रही है वहाँ वॉर इज द इन्फ्लेशन, कॉज ऑफ द इन्फ्लेशन। कहीं पे एक्सेसिव मॉनेटरी एक्सपेंशन आर द कॉज ऑफ इन्फ्लेशन। बट राइट नाउ इफ वी लुक एट इंडिया, अगर हम इंडियन सिचुएशन में देखें, बिकॉज ऑफ द कॉन्टिन्यूस लॉकडाउन, प्रोडक्शन हैज गॉन डाउन, प्रोडक्शन डाउन हो गई। दिस इज वन ऑफ द रीजन जो जिसकी वजह से इन्फ्लेशन जो है वो हाई हो रहा है। बट ऑन द अदर हैंड, in India, even the aggregate demand has gone down. Aggregate demand भी नीचे गई है because the income level of the people has reduced, their salaries have cut down, salaries cut down हुई है, unemployment बहुत ज्यादा हुआ है। लेकिन जो supply chain है, supply chain ज्यादा contract हुई है as compared to demand। तो इंडिया में दोनों ही नीचे गई है। मैम तो गवर्नमेंट इसको कैसे करेक्ट करेगी, क्योंकि अब गवर्नमेंट ने तभी फिस्कल मेजर लिया था। गवर्नमेंट ने अपना वो बार बार बोलते रहते हैं क्या, 200 समथिंग करोड़ का जो पैकेज ऑफर किया था स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को, एमएसएमई को, कि दे शुड इन्वेस्ट, और दे गवर्नमेंट हैज प्रोवाइडेड हेल्प टू दीज प्रोडक्शन यूनिट्स कि ताकि उनका लॉस रिकवर हो सके, वो मोटिवेट हो सके, ताकि वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें, बिकॉज देयर एम्प्लॉयमेंट लेवल इन दोस फॉर्म्स वर गोइंग डाउन, वो लॉसेस फेस कर रही थी। तो गवर्नमेंट ने फिस्कल एक्सपेंशन किया है बहुत स्ट्रॉन्ग बाय गिविंग दी पैकेज। ये बार बार हम सुनते भी रहते हैं कि गवर्नमेंट हैज गिवन दिस मच पैकेज। हाँ, दैट इज डिबेटेबल। डिबेटेबल इशू क्या है कि किस तरीके से पैकेज देना चाहिए था। लाइक मेनी ऑफ द इकोनॉमिस्ट्स आर सेइंग डू द डायरेक्ट ट्रांसफर करो। ये तुम सुन भी रहे होंगे कि many economists are even Raghuram Rajan and all these are saying to Indian government कि लोगों की पॉकेट में डायरेक्ट जो है ट्रांसफर करो, ताकि अनएम्प्लॉयमेंट का जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो सके, डिमांड बढ़ सके, राइट। एंड सेकेंडली जो एमएसएमईज हैं, जो प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, उनको भी कुछ डायरेक्ट बेनिफिट्स दो, ताकि वो उनकी कॉस्ट जो है वो लोअर डाउन हो, and they should be able to create more output and more production. So it is a debatable issue कि जो जिस तरीके से गवर्नमेंट मेजर ले रही है, are these measures are enough for the to bringing the economy in the upward direction or not? ये एक debatable बात है। But yes, government has done a fiscal expansion. गवर्नमेंट ने काफी fiscal expansion किया है, monetary expansion भी हुआ है, जो आपको जो फंड्स भी हैं वो लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं, सो दैट these production units should get the capital at a lower rate of interest. So there is a expansionary policy है। तो तुम इन्फ्लेशन की बात कर रहे हो कि there is a problem of unemployment, still inflation is there because जो प्रोडक्शन, इन्फ्लेशन किस चीज की वजह से होती है, या तो आपकी एग्रीगेट डिमांड बहुत हाई हो जाए एज कंपेयर टू योर आउटपुट, या फिर आपकी आउटपुट जो है वो ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाए, एज आपकी एग्रीगेट डिमांड भी रिड्यूस हो रही है, लेकिन उससे ज्यादा फास्टर स्पीड से आपकी जो है वो एग्रीगेट सप्लाई रिड्यूस हो रही है, सो अल्टीमेटली प्राइसेस विल इंक्रीज, राइट। यस मैम। सो बोथ अल्टीमेटली क्या होता है, सिर्फ एक साइड की फोर्स नहीं वर्क कर रही होती, फोर्सेस वर्क फ्रॉम बोथ दी साइड्स। तो यहाँ पे नो डाउट, जैसे मैं न्यूज़पेपर्स का ही केस देख रही थी, क्योंकि ड्यू टू कोविड एंड ऑल लोगों ने न्यूज़पेपर्स जो है पेपर फॉर्म में लेना बंद कर दिया, और ई पेपर्स का जो ट्रेंड है वो ट्रेंड चेंज भी हो रहा था, बट ड्यू टू कोविड वो ट्रेंड थोड़ा फास्टली चेंज हो गया, राइट। स्पीड आ गई उसमें, जैसे हमने हार्ड कॉपी लेना, मैंने खुद ने हार्ड कॉपीज जो है न्यूज़पेपर के लेना बंद कर दिया, और ई पेपर्स जो है उस पे ज्यादा आ गया। Now can you think what has happened with the people who were working in the printing press, labor who was working in the printing press, the people who were supplying ink, paper to these newspaper units, तो वो automatically उनकी income जो है वो fall कर गई, right? तो और इन्फ्लेशन इसलिए बढ़ रही है क्योंकि प्रोडक्शन में फॉल और ज्यादा स्ट्रांगली है। यस मैम। सो ऑल द थिंग्स आर वर्किंग टुगेदर, सब फोर्सेस जो हैं एक साथ वर्क कर रही हैं, एंड गवर्नमेंट इज फॉलोइंग एक्सपेंशनरी पॉलिसीज, क्योंकि
जो ये इन्फ्लेशन है वो इन्फ्लेशन इसलिए नहीं है क्योंकि लोगों के पास एक्सेस मनी है, ये इन्फ्लेशन इसलिए है क्योंकि प्रोडक्शन ड्रास्टिकली श्रिंक हो गई है, जीडीपी कितना ज्यादा फॉल कर गया है। Automatically when production will increase, output will increase, people will gain employment, then automatically again the problem of inflation will get cured. तो inflation cure हो जाएगा अगर हम employment, output, supply side को strong करें। मैम बीपी जैसे इसमें हम शो कर रहे हैं तो डेप्रिसिएशन हो रही है हमारी करेंसी की। डेप्रिसिएशन तो हमारी करेंसी में हुआ है, डॉलर कितना महंगा हो गया है। यस मैम, डॉलर हैज इंक्रीज्ड, राइट। और ये जो डेप्रिसिएशन है ये मार्केट फोर्सेस पे डिपेंड करता है, तो इसको इसीलिए तुम देखोगे कि अगर हम फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी इन सबको यूज भी करें, स्टिल मोस्ट ऑफ द टाइम एज बीइंग अ इंडियन इकोनॉमी we most of the time we are in the situation of deficit। तो ये एक डिजायरेबल चेंज कि इतना डेप्रिसिएशन हो जाए कि हम यहाँ पहुंच जाए, तो दिस इज व्हाट वी डिजायर। बट एक्चुअली चेंज कितना होगा, फॉल कितना होगा, दैट विल डिपेंड ऑन दी मार्केट फोर्सेस, क्योंकि जो प्रोडक्ट डिमांड है दैट इज कमिंग फ्रॉम दी फॉरेन मार्केट से हमारी डिमांड कितनी इफेक्ट होती है डेप्रिसिएशन से, ये सारे फैक्टर्स हैं जो वर्क करते हैं। दैट इज व्हाई मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर इन अ डेफिसिट सिचुएशन। यस मैम, फिर हम उसको कैपिटल अकाउंट से करेक्ट करते हैं। हाँ, करेक्ट करते हैं हम उसको, लेकिन बट देयर इज एक्चुअल सेंस में देखा जाए कि एक्चुअल ट्रांजैक्शन में देखा जाए तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम डेफिसिट सिचुएशन में होते हैं, क्योंकि हम इसको बिल्कुल अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकते। मेनी फैक्टर्स आर वर्किंग टुगेदर कि कितना डेप्रिसिएशन होगा, कितना फॉरेन में डिमांड बढ़ेगा, अगर हमारी चीजें सस्ती होंगी तो कितना जो है डिमांड फॉरेन कंट्री में उसका इंक्रीज होगा। ऑल दीज थिंग्स वर्क टुगेदर, कितनी इलास्टिसिटी है बेसिकली, राइट मैम। जी मैम जैसे हम फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट ही कर रहे थे और बीपी को हम डेप्रिशिएट कर रहे थे, तो वो तो हमारे हाथ में नहीं होता फ्लेक्सिबल में, मतलब गवर्नमेंट के हाथ में नहीं होता। तो मैम कई बार हम जैसे ऐसे लेते हैं जैसे हमने यहाँ पे लिया नो डाटा, तभी मैंने कहा कि एक्चुअली इट इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। किसको हम डिवैल्यूएशन नहीं कर रहे, हम डेप्रिसिएशन कह रहे हैं। डिवैल्यूएशन गवर्नमेंट कर सकती है, वो फिक्स्ड रिजीम में होता है, लेकिन डेप्रिसिएशन डिपेंड्स ऑन द मार्केट फोर्सेस। बट ओवर हियर व्हाट हैपेंस व्हेन देयर इज एक्सपेंशन, अगर मॉनेटरी एक्सपेंशन है, फिस्कल एक्सपेंशन है, बिकॉज ऑफ द मॉनेटरी एक्सपेंशन जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो हम कहते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं, if there is fiscal expansion, if there is monetary expansion, then due to monetary expansion जो है आपको जो मनी है फॉर प्रोडक्शन वो इजीली अवेलेबल हो जाती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द कंट्री इंक्रीजेस। प्रोडक्टिव कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज होती है और उसकी जो एक्सपोर्ट्स प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी है वो भी इंक्रीज होती है। ड्यू टू दिस नेट एक्सपोर्ट्स इंक्रीजेस, जो नेट एक्सपोर्ट्स है उन पे बेनिफिशियल इफेक्ट आता है, राइट। So because of these effects in the economy, क्योंकि net exports पे beneficial effect आएगा because of these expansions, in expansions की वजह से cost of production जो है वो fall करती है। When cost of production falls, then goods become cheaper as compared to the foreign goods, and due to this we say that क्योंकि price जो है वो comparatively effect होते हैं, तो due to this monetary expansions है, जो depreciation है वो जो है वर्क करना शुरू करता है इकोनॉमी। कितना डेप्रिशिएट होएगा, दैट विल डिपेंड ऑन मेनी फोर्सेस, दैट विल डिपेंड ऑन द फोर्सेस व्हिच आर वर्किंग इन द फॉरेन मार्केट आल्सो। बट दिस इज व्हाट इट इज डिजायरेबल। हम एक डिजायरेबल कंडीशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हम बैलेंस कैसे ला सकते हैं अगर इस तरीके की सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो, एंड दिस लेवल ऑफ अ डेप्रिसिएशन इज रिक्वायर्ड, इट इज डिजायरेबल, राइट। मैम जब हम अभी वो पढ़े थे पब्लिक फाइनेंस, तो उसमें इंटरनेशनल, तो उसमें भी ऐसे था और उसमें कुछ कैपिटल मूवमेंट वो तुमने फ्लेमिंग मॉडल पढ़ा होगा।
हाँ मंडल फ्लेमिंग में ही था वो। तो मैम इसी में ही था वो भी कि बीओपी मतलब फ्लेक्सिबल था। हाँ बिल्कुल इसी तरीके का उन्होंने भी फ्रेमवर्क लिया हुआ है कि कैपिटल मूवमेंट होती है एंड ऑल दैट, राइट। मैम मतलब हम यहाँ पे नहीं करेंगे वो, मतलब वो क्लियर उसको रिलेट कर सकते हो, यू कैन रिलेट इट विद दिस आल्सो कि कैपिटल मूवमेंट होगी और ये सब होगा, आप उसको साथ रिलेट कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। ओके राइट। सो दिस इज क्योंकि मुंडेल फ्लेमिंग मॉडल भी बेसिकली यही एक्सप्लेन कर रहा है कि बैलेंस कैसे अचीव किया जा सकता है, लेकिन हम यहाँ पे स्पेसिफिकली मुंडेल फ्लेमिंग मॉडल नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम सिंपल पॉलिसी इफेक्टिवनेस को स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, कि कौन सी पॉलिसी इफेक्टिव रहेगी, कौन सी सिचुएशन इफेक्टिव रहेगी, पर मुंडेल फ्लेमिंग मॉडल भी यही डिस्कस करता है। तो दोनों को अगर वहां का नॉलेज यू कैन इजीली यूज ओवर हियर आल्सो, there is no problem. Okay. Right? So this is internal inflation and BOP deficit. Next, यहाँ पे हमारी जो desirable policies हैं, वो ये desirable change जो है, we are desiring to achieve this type of a balance को achieve करने के लिए. Then next हमारे पास आता है ये deficit के साथ हमने combination ले लिए. Now we will take the combination with the surplus. हम surplus के साथ लेंगे, right? So if there is, like for example, again we take there is internal unemployment. अगर internal unemployment है, plus there is BOP deficit, BOP surplus is there, then in that case हम यहाँ पे सिचुएशन लेते हैं, this is IS0, this is LM0 and this is Y0, and क्योंकि हम सरप्लस ले रहे हैं तो जो हमारा बीबी कर्व होगा वो इस ई पॉइंट से नीचे होगा, राइट. सो दिस इज सपोज बीबी कर्व, ये हमारा बीबी कर्व आ गया, एंड वी आर टेकिंग दैट देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट कर रही है, देन इन दैट केस दैट मीन्स आर फुल एम्प्लॉयमेंट, हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट है YF, it is on more than the it is more than Y0, ये Y0 से ज़्यादा है. In that case what type of a policy will be required? policy कौन सी required होगी? to remove the unemployment को remove करने के लिए we will take the expansionary policies जो है वो अडॉप्ट की जाएंगी. So we will take expansionary policy, monetary policy, expansionary fiscal policy, and as far as the exchange rate is concerned, it is desirable that there should be appreciation in the rate of interest, exchange rate में appreciation जो है वो desirable होगी. So over here we can show this that there should be expansion in the fiscal, there should be fiscal expansion, there should be monetary expansion होना चाहिए, and there should be appreciation in the exchange rate में जो है appreciation allowed होनी चाहिए. So because of appreciation BB curve will shift from P to P1, P से P1 पे shift होगा, right? So this type of a policy mix is desirable when there is internal unemployment and BOP surplus. अगर BOP surplus जो है वो exist कर रहा है, and P1 will be the equilibrium level. So there should be inflow of capital, जो capital का है inflow होना चाहिए, right? Because there should be outflow. अगर appreciation होगी then there should be outflow होगा, and the problem of surplus will be resolved. So appreciation is desirable in this type of a condition, right? And हम fourth अगर case लें, fourth case हम ले रहे हैं, if the internal economy is suffering from the internal inflation exist कर रहा है, and there is BOP surplus, अगर BOP surplus में है, then in that case this is IS0, this is
LM0. This is the equilibrium point, and this equilibrium point is existing in us with the surplus. So B curve जो है that is below this point is point से नीचे exist कर रहा है, and this is Y0. अगर हम inflation ले रहे हैं तो inflation हम यहाँ assume कर रहे हैं कि suppose it is more, this inflation is because Y0 is more than YF. जो Y0 है वो YF से ज़्यादा है, then in that particular case अगर हम यहाँ पे लें कहीं भी ले लो, यहाँ पे YF जो है that is less than Y0, right? Now to achieve this, to reduce the level of inflation, contractionary policy will be adopted. IS1, contractionary monetary policy will be adopted. LM1, contractionary policies होंगी, and appreciation in the BV in the balance of payment should be allowed. So there should be appreciation in the balance of payment. Exchange rate में appreciation होनी चाहिए, right? Due to this, their economy will be on internal and external balance. So the desirable changes which are required in the policy are, there should be contractionary monetary policy, contractionary fiscal policy, and exchange rate should be appreciating. ये appreciation होना चाहिए exchange rate में, right? So that means अगर हम ultimately अगर हम यहाँ पे लें internal and external balance and policy effectiveness, अगर policy effectiveness लें, तो यहाँ first case हम ले रहे हैं, if there is fixed exchange rate, अगर fixed exchange rate है, then monetary, यहाँ पे लेते हैं monetary policy and fiscal policy and exchange rate policy, right? And again अगर हम लें first situation, internal unemployment with BOP deficit, ये first case ले रहे हैं, इस तरीके का अगर situation है. Second situation we are taking internal inflation plus BOP deficit. Third है internal unemployment plus BOP surplus. Fourth one is internal inflation. You can make this chart. ये तुम्हारी नोट्स में नहीं है, ये तुम खुद ही बना सकते हो कि अल्टीमेटली ये क्रक्स है. इस तरीके की पॉलिसीज जो है वो डिजायरेबल होंगी. इंटरनल इन्फ्लेशन प्लस बीओपी सरप्लस. मैम ये जो डेफिसिट बीओपी का डेफिसिट और सरप्लस है, अगर सरप्लस होगा तो हमेशा अप्रिसिएशन ही होगी और अगर डेफिसिट होगा तो हमेशा डेप्रिसिएशन होगी. मैम ये इस पे तो डिपेंड नहीं कर ही नहीं रहा ना कि इन्फ्लेशन है या फिर अनएम्प्लॉयमेंट है. ये इस पर्टिकुलर यस नो डाउट कि ये चीजें जो हैं वो हमारी एप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन को इफेक्ट करती हैं कि एप्रिसिएशन होगा कि डेप्रिसिएशन होगा. जैसे जनरली जो इन्फ्लेशन है वो डेप्रिशिएट करती है, इन्फ्लेशन डेप्रिसिएशन जनरेट करती है, बट थ्रू अदर मेजर्स, दूसरे फैक्टर्स के थ्रू दी ट्राई शुड बी देयर कि एप्रिसिएशन आए अगर सरप्लस का प्रॉब्लम है. नहीं तो अदरवाइज इन्फ्लेशन मोस्टली, अगर इन्फ्लेशन का इफेक्ट दोगे तो इन्फ्लेशन जो है वो मोस्टली डेप्रिसिएशन क्रिएट करती है, राइट? लेकिन देयर आर अदर फैक्टर, डिजायरेबल है if other factors are creating other factors should be get affected in such a manner that they should overcome the depreciation which is get created by inflation, right? Yes ma'am. So we are over here we are discussing that what type of a change is desirable, कौन सा change है वो effective होगा इन problems को solve करने के लिए,
एंड नो डाउट ये जो अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन है ये एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन को जो है इफेक्ट करती हैं, बट डिजायरेबल इज दैट इफ देयर इज डेफिसिट देयर शुड बी डेप्रिसिएशन, इफ देयर इज सरप्लस अगर सरप्लस है तो एप्रिसिएशन होनी चाहिए, ये हमारी डिजायरेबिलिटी होती है। यस मैम। राइट, सो ये आ गया हमारा। देन वी टेक फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। अगर हम फ्लेक्सिबल की बात करें, फ्लेक्सिबल में अगेन these four combination, internal unemployment plus deficit, I'm just directly writing it now, internal inflation plus deficit, third internal unemployment plus surplus, fourth internal inflation plus surplus। राइट, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है तो ये बीओपी का प्रॉब्लम है, ये मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर आ जाता है क्योंकि एक्सचेंज रेट आपका फिक्स्ड है। दैट इज नॉट द केस इन द केस ऑफ फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल में जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन रिक्वायरमेंट ऑफ द इंटरनल इकोनॉमी इट कैन बी फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल हो सकती है। तो अगर इंटरनल अनएम्प्लॉयमेंट है तो फिस्कल पॉलिसी कैसी होगी, कैसी होनी चाहिए? कल हमने डिस्कस किया, इट शुड बी एक्सपेंशनरी। और डेफिसिट को क्योर करने के लिए हमें मॉनेटरी पॉलिसी कैसी चाहिए होगी? कल हमने डिस्कस किया था कॉन्ट्रैक्शनरी। कल हमने डिस्कस किया था, बताओ कॉन्ट्रैक्शनरी थी कि एक्सपेंशनरी थी? कॉन्ट्रैक्शनरी। अगर डेफिसिट का प्रॉब्लम है तो इट शुड बी कॉन्ट्रैक्शनरी। ये हम अपनी कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी लेते हैं। और आपका जो एक्सचेंज रेट है वो फिक्स्ड रहेगा, देयर इज नो चेंज इन दैट, राइट। अगर इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम है तो फिस्कल पॉलिसी कॉन्ट्रैक्शनरी और डेफिसिट की प्रॉब्लम के लिए हम मॉनेटरी पॉलिसी को यूज कर रहे हैं तो डेफिसिट है इट शुड बी कॉन्ट्रैक्शनरी, हमारी कॉन्ट्रैक्शनरी होगी, राइट। इन केस ऑफ अगेन अनएम्प्लॉयमेंट एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी ले रहे थे और सरप्लस में हम एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी जो है सजेस्ट करते हैं। और अगर इन्फ्लेशन के लिए हम कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी और सरप्लस के लिए एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी जो है हम वी वर सजेस्टिंग दैट। और एक्सचेंज रेट में कोई यहाँ पे चेंज नहीं आ रहा है। This is the case in case of fixed exchange rate. This type of a policy combination is generally desirable. But again, I am telling you again and again, finally it depends on the problems in the economy, what are the causes. But in general, अगर हम जनरल लें तो इस तरीके का जो चेंज है दैट इज डिजायरेबल। इन केस ऑफ फ्लेक्सिबल, अगर हम फ्लेक्सिबल ले रहे हैं मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी एंड एक्सचेंज रेट, देन इन दैट केस for unemployment, reduce unemployment, expansionary monetary policy, expansionary fiscal policy, and to resolve the problem of deficit, there should be a depreciation. हम यहाँ पे depreciation ले रहे हैं, right? In case of inflation, contractionary monetary policy, contractionary fiscal policy, and there should be depreciation. Depreciation हम ले रहे हैं, right? In case of unemployment, expansionary monetary policy, expansionary fiscal policy, and surplus, then appreciation, right? Then in case of inflation, contractionary monetary policy, contractionary fiscal policy, and surplus situation में there should be appreciation, should be allowed, appreciation allowed होनी चाहिए, right? So this is our different combination policy mix जो है under fixed exchange rate and under flexible exchange rate. Is that clear? Yes ma'am. Right? So ये था हमारा ये topic, internal external balances to monetary. Yes मैम जब फिक्स्ड एक्सचेंज रेट होता है तब तो गवर्नमेंट के हाथ में होता है, तो गवर्नमेंट फिर मतलब जब डेफिसिट है तो उसको डिवैल्यूएशन क्यों नहीं कर देती करेंसी को?
इंडिया ने किया है डिवैल्यूएशंस। इंडिया आई थिंक 3 टाइम्स ये मेजर यूज कर चुका है। बट जब हम इवैल्यूएशन करते हैं, इवैल्यूएशन जो है इट इज नो डाउट, अगर डीओपी में क्रॉनिक प्रॉब्लम आ जाए देन गवर्नमेंट गोज फॉर डिवैल्यूएशन। क्योंकि डिवैल्यूएशन से क्या होता है, डॉलर बिकम्स कॉस्टलियर। आपका जो डॉलर है, जो फॉरेन एक्सचेंज है, वो कॉस्टलियर हो जाता है जब आप डिवैल्यूएशन, अपनी करेंसी की डिवैल्यूएशन कर रहे हो, राइट? सो ड्यू टू दिस व्हाट हैपेंस, बीइंग अ डेवलपिंग कंट्री, we need even machines from the foreign land. We need capital, जो हमारी machinery base है, जो even many things which are required for the productive purpose, which is required by the producers and entrepreneur to enhance their productive capacity. ये सारी चीजें जो हैं ये बाहर से import होती हैं, right? So due to this what happened, जब भी डिवैल्यूएशन का मेजर अडॉप्ट, गवर्नमेंट क्रॉनिक इम्बैलेंस को सॉल्व करने के लिए डिवैल्यूएशन की हेल्प लेती है, लेकिन वो तभी लिया जाता है अगर देयर इज अ क्रॉनिक प्रॉब्लम इन अ बीओपी, अगर बीओपी में बहुत ज्यादा क्रॉनिक प्रॉब्लम हो, क्योंकि डिवैल्यूएशन जो है वो दूसरे सेक्टर्स को हार्मफुली इफेक्ट करती है, प्रोडक्शन कैपेसिटी को भी, क्योंकि हम वी आर नॉट दैट कंट्री जहाँ पे हमारी टेक्नोलॉजिकल हमारा बेस बहुत स्ट्रॉन्ग हो। नाउ इट हैज चेंज्ड अ लॉट, बट ड्यूरिंग दैट टाइम जब फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम हुआ करते थे, ड्यूरिंग दैट टाइम वी वर डिपेंडेंट ऑन फॉरेन नेशनल फॉर टेक्नोलॉजी, फॉर बेटर मशीनरी, फॉर प्रोडक्टिव कैपेसिटी। नो डाउट जो कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन है, नॉन प्रोडक्टिव आइटम्स की कंजम्पशन है, अगर वो रिड्यूस हो रही है ज्यादा, देन इट इज गुड फॉर द कंट्री, क्योंकि लोग फिर जो है डोमेस्टिक सब्स्टिट्यूट्स को यूज करते हैं। बट बिकॉज वी import technological goods also, capital goods also from the foreign land, जो productive capacity को harmfully affect कर सकता है अगर गवर्नमेंट बार बार डिवैल्यूएशन को लेती है। और अगर बार बार डिवैल्यूएशन की जाती है, इट ब्रिंग्स अनसर्टेनिटी इन दिस सिस्टम, ये अनसर्टेनिटी करता है। आज आप डील कर रहे हो, डील में आपने प्राइसेस फिक्स, उस हिसाब से आपने कॉस्ट कैलकुलेट कर लिया कि फॉरेन से ये चीज आएगी, मशीनरी इतने की आएगी, यू हैव कैलकुलेटेड योर कॉस्ट। और गवर्नमेंट अगर बार बार डिवैल्यूएशन कर रही है, लॉट्स ऑफ अनसर्टेनिटी विल बी देयर इन दोस कैलकुलेशन, सो इट इंक्रीजेस अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी को इंक्रीज करता है, स्टेबिलिटी को, स्टेबल सिस्टम इज ऑलवेज कंसीडर्ड एज अ बेटर सिस्टम। जितनी ज्यादा इंस्टेबिलिटी होगी उतना ही जो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट है वो ज्यादा होगा। इसलिए डिवैल्यूएशन जब गवर्नमेंट करती है तो बहुत ज्यादा सोच कर करती है, क्योंकि डिवैल्यूएशन आपका क्रॉनिक इम्बैलेंस, आपके इम्बैलेंस को तो ठीक करता है, बट इट ब्रिंग्स अनसर्टेनिटी इन द इकोनॉमी, इकोनॉमी में अनसर्टेनिटी लेकर आता है। सो डिवैल्यूएशन इसलिए तब प्रेफर की जाती है when there is a chronic problem in the balance of payment, right? तो मैम मतलब इसलिए जब बीओपी में डेफिसिट है तो फिक्स के अंदर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी लेकर उसको ठीक करने की कोशिश करती है पहले। हाँ, बार बार सीधा डायरेक्ट डिवैल्यूएशंस और अनसर्टेनिटी लाती है, राइट? क्योंकि इन फिक्स एक्सचेंज रेट जो हम तभी मैंने शुरू में ही कहा था कि फिक्स एक्सचेंज रेट में क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी, तुम ये सोचो कि मॉनेटरी पॉलिसी को फ्रीडम नहीं है कि वो अपने आप को अपनी इकोनॉमी के हिसाब से चेंज कर सके, क्योंकि एक्सटर्नल वाला जो फैक्टर है वो भी उसी के ऊपर आ रहा है। बट अंडर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट मॉनेटरी पॉलिसी को जो है अथॉरिटीज को है थोड़ी फ्री विल मिल जाती है अपनी इंटरनल इकोनॉमी के अकॉर्डिंग, राइट? और थोड़ी फ्री विल, क्योंकि नो डाउट जो हमारी फिस्कल एक्सपेंशन या मॉनेटरी एक्सपेंशन है, ये भी एक फैक्टर होता है जो एप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन को इफेक्ट करते हैं। Yes, so this was our topic, continue करेंगे।